Good morning, students. Myself, Professor Hilal Bausar from Raffel College, Vapi, and I am going to teach you subject environmental science. In last video session, we discussed the deforestation and its causes and effects. Right? What is deforestation? Deforestation means removal of forest and cutting of trees. Now, in today's session, we discuss the opposite. That is what the afforestation. Afforestation means what? Afforestation means afforestation. Afforestation means what? Afforestation means plantation. Deforestation means cutting off a trees. तो उसका opposite afforestation. That is what the plantation. Plantation करना, right? Tree को plant करना. That is called the afforestation. Afforestation and its importance. The best way of conservation of forest is afforestation. फॉरेस्ट को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? तो हमें क्या करना होगा? अफॉरेस्टेशन करना होगा, प्लांटेशन करना होगा. अफॉरेस्टेशन इज़ द प्लांटेशन ऑफ ट्रीज इन अल्टरनेटिव लैंड बैरन और अनएक्सप्लॉइटेड एरियाज टू इम्प्रूव द क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट. कहाँ पे करना है? जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा, अनएक्सप्लॉइटेड एरिया जो लैंड बैरन है वो जगह पे हमें करना है, ताकि क्लाइमेट का और एनवायरनमेंट का क्लाइमेट वो चेंज हो जाए, इम्प्रूव हो जाए. अफॉरेस्टेशन इंक्लूड्स इंटेंसिव ट्री प्लांटिंग अमोंग दी रोड साइड. कहाँ पे करना है? हमें रोड साइड पे करना है प्लांटेशन. रिक्लेमिनेशन ऑफ वाटर लॉग एंड इरोडेड लैंड. दैट मीन्स जहाँ पे पानी जहाँ पे जमा रहता है वो जगह पे जो लैंड इरोड हो रही है, जो नष्ट हो रही है, वो जगह पे करना है. एंड प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इन दी अर्बन एरियाज. द बेनिफिट्स derived from the forests speak for the need of afforestation of land. Afforestation plays a vital role in retaining fertility of the soil, checking the soil erosion and controlling the climate of the area and providing the shelter for many animals. Afforestation क्या करता है? तो वो क्या करेगा? सॉइल इरोजन को कंट्रोल करेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज करेगा सॉइल की, कंट्रोलिंग दी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, राइट, एंड एनिमल को शेल्टर प्रोवाइड करता है. In recent years, the importance of forest and afforestation have been realized. Several forest areas have been designed as national forests, national parks, and gardens. Nowadays, over about the 50 wildlife sanctuaries, reserves and national parks exist in India. कितने? Total 50 wildlife sanctuaries and the national parks in India. Not only this, but government has launched the Van Mahotsav scheme, under which sampling of trees are being planted every year at suitable places throughout the कंट्री, राइट. वन महोत्सव स्कीम करते हैं. आपको पता है एनवायरनमेंट डे हम 5 जून को मनाते हैं, और उस दिन क्या करते हैं? सब प्लांटेशन करते हैं, राइट. ऐसे एनवायरनमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं. द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड नाउ डेज देर आर ओवर 400 वेल नोन बॉटनिकल गार्डन्स in the world of which Indian Botanical Gardens of शिवपुर is one. आपको पता है बॉटनिकल गार्डन है हमारे यहाँ भी सापुतारा के नज़दीक है बॉटनिकल गार्डन, राइट. These gardens are useful not only for botanist, horticulturist, nurseryman, landscape gardens. ये सिर्फ बॉटनिस्टिक, हॉर्टिकल्चर और नर्सरी मैन को ही नहीं यूज़फुल है, बट इट इज़ also serve as a thing of beauty and holiday camp to thousands of tourism. It is again a place of tourism. वो एक place बन गया है, right, tourism के लिए और camp करने के लिए. Afforestation therefore play a vital role in retaining the fertility of soil, checking the soil erosion, controlling the climate of the area, and providing the shelter to many animals. To achieve the goals of afforestation, a special program of tree plantation called the Van Mahotsav is held in the month of August and February every year in our country. It should be made more popular and effective. Also, to achieve these goals, the following
फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस शुड बी केयरफुली इंटीग्रेटेड। फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस इंटीग्रेट की है, उसमें क्या है, द प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्री एंड प्रोडक्शन और कमर्शियल फॉरेस्ट्री। अंडर द प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री प्रोग्राम, the central and state governments have undertaken many afforestation program। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम किए, उसमें से फर्स्ट इज़ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, तो इन दिस द सेम पीस ऑफ लैंड इज़ यूज, सेम ही पीस लेते हैं लैंड का और वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री, इन दिस ट्रीज आर रेज्ड फॉर फ्यूल वुड, फोडर, edible fruits, agriculture implements and construction purposes for the rural populations. And the third one, urban forestry. In these, the ornamental fruit, ornamental means that is the decorative trees or plant, are grown in the urban areas such as अर्बन एरिया में प्लांट, डेकोरेटिव प्लांट ग्रो करते हैं, जैसे कि रोजेज़, राइट। तो वो कहाँ पे, तो हमारे हाउस के कंपाउंड में, कॉमन पार्क्स में एंड अलोंग दी रोड्स, वहाँ पे डेकोरेटिव ट्रीज़ को, ऑर्नामेंटल ट्रीज़ को ग्रोन अप करते हैं। तो दीज आर द थ्री programs: agroforestry, social forestry and urban forestry, right? So this is the afforestation. Afforestation means what? That is the plantation of the trees, right? ताकि हम forest को conserve कर सकें। Then the next point is forest as a reservoir of biodiversity। reservoir means what? वो biodiversity के लिए accumulation है, store है, right? biodiversity आपको पता है, that is what? different type of variety of plant and animals in the world, right? तो उन सब के लिए वो क्या है, एक accumulation, store जैसा है, right? भंडोर जैसा है वो forest आर स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो क्या है, हाउस है, किसके लिए है, तो बायोडाइवर्सिटी। एंड एज अ इकोसिस्टम प्रोवाइड द होस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल सर्विसेज टू दी मैनकाइंड। टू ऑफर दीज सर्विसेज फॉरेस्ट हैव फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ फंक्शन। कितने टाइप है फॉरेस्ट के, 4 टाइप ऑफ फंक्शन। फॉरेस्ट हमें कितने टाइप ऑफ फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट इज़ प्रोटेक्टिव फंक्शन, सेकेंड इज़ प्रोडक्टिव फंक्शन, थर्ड इज़ एसेसरी फंक्शन एंड फोर्थ वन इज़ रेगुलेटिव फंक्शन, राइट। तो जिसमें से देखते हैं हम फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिव मीन्स प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करता है, दीज इंक्लूड द प्रोटेक्टिव रोल्स ऑफ फॉरेस्ट अगेंस्ट सॉइल इरोजन, से हमें प्रोटेक्ट करता है, सॉइल इरोजन कम करता है, कंट्रोल करता है। ड्रॉट्स और फ्लड्स को कंट्रोल करता है, राइट। इंटेंस रेडिएशन, जो रेडिएशन सन में से आते हैं उसमें से भी हमें प्रोटेक्ट करता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोटेक्टिव फंक्शन। सेकेंड वन प्रोडक्टिव फंक्शन। प्रोडक्टिव फंक्शन मीन्स फॉरेस्ट हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। फॉरेस्ट आर द सोर्स ऑफ वुड एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक गम्स, रेजिन्स, फाइबर, medicines, kata, honey, BD wrappers, pulp, paper, etc. Third one is accessory. Accessory, that means its beauty, aesthetic value, right? These include the role of forest in the recreation, aesthetics, and as a habitat of the diverse wildlife, etc. And the regulative function, that is the fourth one. The regulative functions involve the एब्सॉर्प्शन, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ गैसेस। एब्सॉर्ब करता है किसको, तो को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करता है और रिलीज करता है ऑक्सीजन को, राइट। दैट इज लाइक CO2 एंड O2। वाटर, मिनरल एलिमेंट्स एंड रेडिएंट एनर्जी, floods, droughts and global biochemical cycle, particularly of carbon, is also regulated by the forest. The regulative function of forest improve the atmospheric and temperature condition and hence the economic and environmental value of landscape. That is the regulative function. वो क्या करता है, regulative function regulate करता है किसको, तो evolve, absorb, storage and release the gases, right. Then next point is forest as a renewable resources। अगर आपको 2 मार्क्स के अंदर आया व्हाट इज फॉरेस्ट एज अ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, डिस्क्राइब दैट,
तो फॉरेस्ट क्या है, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल दैट मीन्स वो जिसको आप वापस से रिन्यू कर सकते हैं, जो रिप्लेस हो सकता है। अगर फॉरेस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो गया, राइट, डिफॉरेस्टेशन हो गया, मे बी नेचुरली फायर वहाँ पे हुआ, राइट, तो उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो गया, ख़त्म हो गया, तो हम वापस से वहाँ पे प्लांटेशन करके वापस से फॉरेस्ट को रिन्यू कर सकते हैं, राइट। द वुड इज़ derived from forest, however, can be regenerated again and again if we go on planting the new trees, right। अब if trees are cutting, अगर आपने ट्री कट कर दिया और उसकी जगह पे वापस से न्यू ट्री प्लांट किया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिन्यूएबल हो जाएगा। हेंस द प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री आर वाइटल। ऑल द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर, firewood, cane and bamboo, grass, medicinal herbs and various other products are useful। ये सारी प्रोडक्ट हमें फॉरेस्ट में से मिलती है। They can always made available or renewed through the continuous plantation। हमें वो ऑलवेज अवेलेबल मिलेगी। कब तक मिलेगी, अगर वो एक बार ख़त्म भी हो गई, अगर हम उसका वापस से प्लांटेशन करते हैं तो वो हमें वो अगेन एंड अगेन वो हमें मिलती ही जाएगी। वाटर, एयर एंड लैंड आर ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉरेस्ट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, वैसे वाटर भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, एयर भी है और लैंड भी renewable resources। So in today's session we discussed the afforestation and its importance, forest as a reservoir biodiversity, and the forest as a renewable resources. Continue in the next session. Till then, goodbye. Thank you.